विवेकानंद कहानी घटना सब केमती प्राच्य पाश्चात्यर से मिलन कले प्राच्यर जो आध्यात्मिक संपत्ति पाश्चात्यर ऐश्वर्यर दुईटी जाकर मिलन न घटिले केबे गोटे जिनस पूर्णांग हुएनि। आज यही सम्मिलनी क्षेत्र में ठाकुरंकर उपदेश तो एमती अनेक उपदेश अच्छे आ अंतिम उपदेश जो बही रे विभिन्न उपदेश गुड़िक अच्छी मुझे सब लिखिकी रखी भी धरी भी पकेट शेषर उपदेश कहले जे तुम्हें आदर्श गृहस्थ हुओ। आदर्श गृहस्थर लक्षण कौन सब तो भाई कहीगले बही रे लिखाई उपदेश ठू आरंभ कर संघ सेवक प्रथम 1 ରୁ 28 भाग पर्यंत दुर्गाचरण भाई ठाकुरंकर सब ग्रंथवली बाहर कर लिखिले। तापरठू जहाँ परवर्ती पर्यायर जमी PhD रिसर्च हुए सेमती 29 भाग रू आज पर्यंत धरी आमर भाई माने परिचालक मुख्य मैंने समस्ते मिसी सब ताऊपर आलोचना अनुशीलन भी आहरी पुष्ट कर। तेणु आदर्श गृहस्थ क्या कह से विषय आ कहार मु तो एक तो जानी कहबार एबे देखा जे मुझे से दिगरे भाई जमी कहले आदर्श गृहस्थ जीवन जापन आज बड़ा सुंदर भाव में जीवन जापन कौ मैंने करती गृहस्थ जीवन जापन समस्ते करती। आ ठाकुर आमको जो अधिका गोटे शब्द जोड़ीदे आदर्श गृहस्थ कहीं आम आदर्श गृहस्थ हेले आमठी जो पिला माने आसबे से ही माने ठाकुर तांको दृष्टि रखिले से देखिले एम द्वारा आउ कि बोध हेनी तेणु से लक्ष्य कर सब एमती कहले। तेणु मुझे दिगरे केते आगे सेटा देखापी मु निजक आज अनुशीलन समस्ते आम करवा प्रत्येक दिन प्रार्थना सरला पर संध्या बेले आम तो ठाकुर को जनाऊँ प्रभु आज यही तक कम कली यही भल कम तक आपण कृपारू कर जो तक मंद कम तक कर सबू जदि मुझे कहीदेवी प्रभु आपण इच्छार होड़ू भाई आउ ठकिबार आउ कि सहज उपाय भाई टे 10 मिनिट ना कहले हाँ तेणु सेठू एबे मु कहे जे चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम आग मु देखे कौटू प्रकृत आदर्श आगे आम कौन करवा देखा आम आगे आदर्श किए जमी सुखमुनि मन मन भावुले मु ज्ञानी होगी भी बापा तांको पठेदेले जा राजा पाखु सेमती आम भावते राजा रामचंद्र आदर्श पुरुष आम सेमती कौन करूँ भाई संघ को आसलुणी 90 मसीह 35 वर्ष हो गला प्रथम 30 वर्ष तो सो टू से एबे भी आम गोटे नोविस स्टिल आम ए नोविस 30 वर्ष खाली डिया टिकार गला माँ थिले संघरे महिला संघ सभापति तेणु माँ देखिले बाहा आसिलु परिवार से ठाकुर परिवार बाहलु घर संसार कलु तेणु ठाकुर टी आसिलु आसला से विभिन्न आड़े कार्यक्रम चाकरी बाहर विभिन्न भारत सारा तो बुलिलु एणे तेणे टी सब चाकरी तेणु कौन है ठाकुर किंतु ठाकुर आम प्रति कृपा रही आम आम आत्मकृपा छोटू से किसी भी आरंभ है सेठू आम लक्ष्य करूँ जो संघ को जाऊ गोटे सम्मिलन को जाऊ आदर्श गृहस्थ उपर बहुत आलोचना हुए आम ताको शुणु जिते बेले बेले भल ना लगे सेठू पलैबू होटेल को कि पुणी ऑनलाइन जब आरंभ हो शुणु इवन भी यही थर भी मुझा पूर्वर 23 मसीहा 24 मसीहा गत थर 25 मसीहार सम्मिलनी यही सब सम्मिलनी रे कौ कौ मैंने भाई मैंने आदर्श गृहस्थ पर कौन कही पूरा मो माँ कह तुम कौन कर आस कहीं नातुनी छुआ खेलौन किस तुम कौन करन मु मो रूमटा बाट बंद कर देगी मुझे शुणे शुणिला सेठू मन रे अरे अच्छा यही माने प्रकृत में कहते ए माने तापर आपण मन में देखिए जड़े जदि आदर्शर कथा कहूब किंतु ता जीवन रे अनुशीलन करूनटा आपण को आते हृदयग्राही हेनी से भाव गोटे शुणिला भाया लगे। तेणु आम स्थानीय लोक मु कौन देखे आग मो परिवार रे रही मु देखे मो परिवार रे कि आदर्श मु देखे मो माँ आदर्श 4 माने 4 से उठिबे माने उठिबे मु नुआ नुआ 4:30 5 मत उठा उठे इच्छा लगे शंख बाजी आप घरे उठिबेनी कि लज्जार विषय से माँ किस तो कहबेनी से केबे किछि कहबेनी पर आम घर माँ सब पर कहे तुमको टे खराब लगुनि धीरे धीरे से कौन हुए मनीष कौन करे निजक अरे ना यहाँ भल आम तो बही पढ़ीचु जानीचु तापर मुझे देखे मो पाखे गोटे जगन्नाथपुर शाखा संघ अच्छी से आम जन को जड़े भाई को आम आदर आम देखीचु भाई कहे मुझे राति 2 ରୁ उठे 2 ରୁ उठी 3 भितर मो नित्यकर्म सार देगी 2 घंटा ध्यान धारणा करे मुझे आगे भाविली लोकटा मिछ कहूब से कहली ना 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 पर मुझे देखिले तो आप जानीदेवे आपन से ना करूँ तेणु आप सीइंग इज बिलिविंग आप जड़े देखिले ना
से कहते आदर्श स्कूल पाठ पढ़ुला बेले टीचर मोर संस्कृत टीचर मैथमेटिक्स टीचर मोर आदर्श थे कथे पदे पदे कथा के श्लोक पदे पदे कथार माने निजर बोलिया अति निज पिला भाया आम तो गाँ स्कूल पाठ पढ़ी आसचु तेणु आम यू आदर्श भावुलु पर जो आध्यात्मिक राज्य आम प्रवेश कलु धीरे धीरे ये देखिलु प्रथम 30 वर्ष सेठू से किसी नुहे खाली ठाकुर कृपा थी ठाकुर दौड़ीटा टाणी धरते जिते रिटायर्ड कलु कौन ठाकुर इच्छा केन्द्र मानकर सब बड़ बड़ भाई प्रति मानकर इच्छा ठाकुर एकाथरे गोटे संघर दायित्व देले सेठू देखिलु तुम्हें तो आदर्श गृहस्थ ही न किंतु जीवन रे कौन आम पाखे ठाकुर कृपार केते गोटे भल जिनस थिला एमती आमर कौन प्रकार खराब व्यवहार चालचलन नाला आम मितव्य होइथिलु आम अल्परे चली जानिबा शिखिथिलु तापरे सचोट साधुता कर्तव्य परायणता वर्कहोलिक माने बहुत समय ड्यूटी करवा ड्यूटी करू माने अंध भाव में ड्यूटी कर चलवा सकाळ 9 रु गले मु राति 9 जाके मु भूली जाए मो पाई संडे मंडे सब सामान थिला से आम कौन गोटे आनंद पाउथुलु कौ प्रकार आनंद पाउथुलु से आज जिते धर्मराज्य को आम आसुचु ये आम देखुचु से आमको पेरेंटाल इगो इगो जमी आमर चाइल्ड इगो पेरेंटाल इगो एंड अडल्ट इगो पेरेंटाल इगोर पुणी था गोटे कंट्रोलिंग पेरेंट गोटे नर्चरिंग पेरेंट कंट्रिंग पेरेंट माने जे जो पेरेंटाल इगोटा आमको एते ग्रास कर देइथिला जे आमे भाबुतलो आमे जा कहूँ से ठीक आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर आई एम द बॉस मु जहाँ कहि से हम से सब चलुला किंतु धर्मराज्य को आसला पर एठे देखिलु से सब जिनिस तुम चलबनी तेणु तुम पेरेंट जो कंट्रोलिंग पेरेंटाल इगो को वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट टू द अडल्ट इगो तुम निज जीवन में जब आम निजे न करूँ कहीदेले हेनी अडल्ट ट्रांजैक्शन है माने मु रेशनल हेबी मो काउंटर पार्टी रेशनल हम जो कमटी करी आम रेशनल जुक्तियुक्त भाव में जुक्ति सम्मत ठाकुर को ग्रहणीय हो ठाकुर को केन्द्र करी तेणु ठाकुर को केन्द्र कर आम कम गुड़िक किपर आम करवा तेणु से मुझे निजक ट्रांसफॉर्म कली आउ गोटे जिनस आम देखू आम बेले आमको गोटे कहुए जहरी विंडो एनालिसिस कर मो जीवन जेतेक कार्यकलाप से 4टी विंडो भितर देखी मुझे देखिपारि प्रथम विंडो आई नो द्वितीय विंडोटी आई डू नॉट नो मते जना मते अजना बाँ पटे सेमती अन्य मानक जना अन्य मानक अजना तेणु मुझे प्रथम विंडोटी मोर देखी आई नो अदर्स नो आम उभय को जना एटा ओपन विंडो यही ओपन विंडोटी आमर जिते बड़ हम विस्तारित हम आम से आदर्श गृहटी हो पार आमर सबुतक गुण मुझे देखिली मुझे निजक जोहरी विंडो एनालिसिस भितर द्वितीय विंडोटी है मते जना प्रथम विंडो है मते जना अन्य मानक जना एटा आम समस्ते जानिले द्वितीय जिनसटी है मते अजना किंतु अन्य मानक जना सेटा है ब्लाइंड विंडो मु जानी पारुनी मो विषय अनेक लोक अनेक कथा जानी मोर खराब गुण जानी मोर केते गुडे भल गुण भी जानी जोड़ा कि मते भी अजना सेटा है गोटे ब्लाइंड विंडो मो पाई तृतीय विंडो है आई नो अदर्स डू नॉट नो सेटा है गोटे हिडन विंडो मु जानी अन्य माने जानी नाहंती सेटा मो पाई गोटे आसेट माने मत आपन को संगीत शिक्षा जना अन्य मानक जना ना आमे आगे कौन भावुलु हिडन विंडो इज ऑलवेज एन आसेट फॉर मी किंतु आध्यात्मिक राज्य को आसला पर आमे जानिलु जे हिडन विंडोटा है भल नुहे कहीं मो पाखे जी ज्ञान अन्य मानक जदि जना ना मुझा जब अन्य मानक देदेवी से ही परिव्याप्त हम मोर आदर्श गृहस्थ जीवन आ शेष जोटी से केवल ठाकुर त्रिपाद अव्यक्त इच्छा आई डू नॉट नो अदर्स डू नॉट नो कहीं जानी ना से अननोन राज्य तेणु मु मोर जना राज्य को जेतिकी जेतिकी बढ़ई बढ़ई चली से विंडोटी की मोर से कौन हम आम आध्यात्मिक जगत में आम से आगेवा आ बहुत भल लगे अमेरिका संघर ये जो उद्यम पाश्चात्यर एठी आपण मानकर जो मानसिक ऐश्वर्य आर्थिक ऐश्वर्य बा विशेषकर 50टी राज्य कथा भाई कहते सबुठी आप आसी एकत्रित हो ठाकुर चिंताधारा को जी कि भविष्य में आमर भविष्य कौन आम समस्ते जानीचु जे विश्वगुरु होती ठाकुर निगमानंद किंतु तांको पाई जो क्षेत्र प्रस्तुति पाई आपण पाश्चात्य भित्ति आसिकी
अमेरिका राष्ट्र रे तार जो मंजी आज बीज बपन करिसेंती हमको बहुत आनंद है, बहुत खुशी आम प्रभु आमको कृपा करंतु। नीलाचल सारस्वत संघ आपण गढ़ीदेले ओडिशावासी को लक्ष्य करी पुरी आरंभ करी कले, किंतु आपणकर से आज सारस्वत संघ आसी सारा सुदूर पृथ्वी विषय व्याप्त हो गला। प्रभु से ही संघर किपर उत्तरोत्तर उन्नति हो, आई संघ मध्यम आम किपर निजक आदर्श गृहस्थटीए करी आमको निजक आग गढ़ी आपण आदर्श को आम विश्वव्याप्त करूँ, से ही कृपा से ही आशीर्वाद प्रभु आमको प्रदान करंतु। विशेषकर अमेरिका संघ को विशेषकर यही संघ आमर उत्तरोत्तर उन्नति हो, यही संघ माध्यम प्रभु आमर मंगल। जय गुरु जय गुरु। प्रफुल्ल वक्तव्य आपण मैंने शुणिले। आई नो अदर्स डू नॉट नो, आई नो अदर्स नो, ये जो कथाटी से कहले खूब भल कथा। बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल। माँ आरंभ करंतु, समय नहीं तेना विशेष के चेंज कर दबा। अनु भाई कहि दन तापर प्रार्थना छाड़ दबा। हो टिके मार होई जानतो ताले माँ टिके अपेक्षा करंतु। अनु भाई अछन त हो अनु भाई आसो समयटा कमी जाव तो अनु भाई कहि दला पर प्रार्थना छाड़ दबा। मधुरण समापित करबा। सरी आसी सरी वाला टाइम चली वाला टाइम जणाते जणात टिके मागे पड़ियो। हम नहीं हो खाइकरी बसिक घर शौच जाइक टिके आ ठाकुर माके बसले कोन खराब होसी। ठाकुर भाई बसी आज ठाकुर को जो समय दिया है ठाकुर मानियानी मु त कहउन ए जे कमै देलो ठाकुर पाके कोड बसी अधिवेशनटा 12:20 में सरे नहीं एते कमै देलो काई समय। हां जणात प्रसाद नाही जे बेसी रेस्ट पीरियडटा बेसी हेउची। जय गुरु अन्न भाई जय गुरु। विजिबल वाच सेठी लगेले इट इज नॉट विजिबल लगेले दोज स्पीकर्स विल लिमिट देयर टाइम पीरियड। भाई कोन जय गुरु। प्राण ठाकुर निराचल शास्त्र संघर सभापति महोदय, निराचल शास्त्र संघ परिचालक महोदय, आमर अमेरिका शास्त्र सभापति महोदय, समस्त भाई माँ माने और आमर संघ को आसवा बाहर संघर मध्य सदस्य माने। तो आज लाइक मुझे इंग्लिश कहना चाहूँचे टे मुझे बोधे ओडिया रे बेस कंफर्टेबल नुहे टे इंग्लिश कंफर्टेबल। सो एंड ऑल्सो आई थिंक मैंने आम अमेरिका ऑडियंस को कैटर करने आई थिंक मु भाविली इंग्लिश आज so today the topic that was given by our program committee and by Thakura is like what is the role of Dinalapi in the formation of an ideal householder. So I'll divide this into 4 parts. In the first part, I'll talk about what is the Dinalapi and what is its importance. In the second part, I'll deep dive into the questions that we generally answer in the Dinalapi. And then one of the most underlying fundamental essence of Dinalapi is Chitta Suddhi. So I will deep dive into some components of like Chitta Suddhi. And then finally, I'll tell you about my own personal experiences, like how I have benefited from Dinalapi. So the first part, what is the Dinalapi? So in the context of American Saraswat Sangha, we have a digital diary, not like a paper, but we have a digital diary. We have like a calendar, which is like month and then the days. So what we do is like, you go to this calendar, you click on a month and the day, and then you will be given a set of questionnaires. So basically the question would vary. For like the general body, we have few questions like 4, sometimes for the class puja members it would be 14, and for some of the Purashcharan members it would be more than 14. So everybody has to answer a certain set of questions. Now these questions could have 2 kinds of categories. One kind of category is like where you answer something yes or no. Like for example, did you wake up on time, right? And you mark yes or no. But then how long you do your kriya, which will be you have to put that in some time, like in minutes, correct? So based on that, we fill our Dinalapi. Now let me dive into why Dinalapi is important. So imagine the whole ocean, your ocean or sea is like formed by drops of water, right? So our life is also formed by accumulation of every day, like how we behave and act. So imagine like, a day where you actually misuse your time, then what happens is like your whole day become negligent, correct? And that the habit that you practice or develop is like a misuse of the habit, right? Or we call it the habit of misuse.
Now, let's say we do something good in our life every day, then you actually lead a wonderful life, and then the habit that you practice is like good habit. So now we have two categories: habits of like a misuse, and habits, good habits or misuse of habits, right? So the idea of our life, or like for any rational person, is to maximize those good habits and minimize those bad habits, right? Because what would happen is, like, if you can plan ahead and you can figure out, like, what things lead me to leading a good life that you can see and visualize, then you could actually plan on that. So, like, for example, every day everyone earns here and everybody wants to do some capital savings, right? And then every month you want to analyze, like, in what areas I did a lot of expenses and in what areas I did a lot of savings. So at the end of the month, you actually calculate, like, how much is the total saving. So as a rational person would like to save more. So similarly, as a rational person would like to maximize on the good habits. So that is why Dinalip is so important for us. Then another perspective, like why Dinalip is important, like, for example, every day you do so many activities, correct? And you cannot remember each and everything that you do. So when you maintain a digital diary, like for every day, at the end of the day, you say, like, hey, these are the things I did and these are the things I did not do, then you actually avoid the limitation of a memory, because in a memory, you cannot capture everything. So noting it down and understanding, like, how I'm progressing in my path is very important to do that. So Dinalip actually helps in that perspective, correct? Then when we feel the Dinalip is not just about marking yes or no, right? When we can say, like, hey, did you hurt someone? You mark it sometimes like, yes or no. But the very important thing of marking yes or no, did you internally realize that you have marked as yes? And do you really realize that you have done something negative or something bad? And if you have done something bad, then pray to Thakura that, hey, Thakura, please forgive me and please give me the courage that I should not repeat this anymore. So that internal realization should happen every day when you feel your Dinalip, correct? And then, there are also traditional references in the literature, like one of my bhaiya told me to tell about Moho Mukdara, which is like a poem composed by Adi Sankaracharya on Bhaja Govindam. So the idea behind is, like, if you just go on reciting the grammars of Panini, you cannot be saved from the vicious cycle of life and death. So what you do is, like, you with the mudgara, which is like a hammer, you actually, beat down the moha, which is the delusion of life, correct? And then there is scientific references. For example, if you might have heard about plasticity or neuroplasticity. So every day when we do something, it gets encoded in our neural pathways or brain pathways, right? So let's say you do something and make it a habit, then it becomes a pathway of the neural encodings. So what happens within the neural, there are neurons that fire. So when you practice something every day, then some of the neurons would fire together. So when they fire together, they call that as, when they fire together, they wire together. So that thing becomes a habit, right? So if you practice something bad habit, that becomes a bad habit for every day. So it's very difficult to get back out of that bad habit. So you have to practice this way, correct? But I'll tell about, like, how Chitta Suddhi is also related to neural encodings, and why Chitta Suddhi is so interesting in our life. But let's deep dive into some of the questions that I feel, and we should understand, like, why these questions are important. And a lot of the Dinalip questions are related to our Dasabhida Niyama. Like, for example, did you wake up in time? It's related to Brahma Murta Sajya Tyaga. Now, what is the time actually defined as a Brahma Murta Sajya Tyaga? It's between 4 a.m. and 6 a.m., right? So why this time is important? People say, or whatever Thakura say, like, during this time, Mahapurusha bless us, especially the people who are trying to do or taking the path of spiritual progress. And it's also interesting to note that there are other related questions. Did you go to the bed on time? And this is related to, did you wake up on time? Like, if you do not go to bed early on time, you cannot wake up on time. So this is also a very important question. And also, did you do Divanidra? Because if you do Divanidra, then you cannot go bed early on time. So all these three questions are related, right?
And then the second question is like, how long was your asana? And this is related to your asana abhyasa. So one of the important thing that God has given us only to human is viveka. And the viveka means logic to reason. Note that animals do not have viveka. They have deha, mana, and knowledge and the jnana, but they do not have viveka, which means they cannot differentiate the atma from deha. Right? So trying to understand like we are atma and not deha removes the deha atma bhimana. So that is something more important to us, and to do that we need to practice sadhana every day to realize like we are atma and not deha. So the third question, like, did you perform the morning and evening puja? And it somehow overlaps with different kinds of dasavidha niyama, like nitya kriyanusthana, sadachara palana, brahmacharya palana. And the important question is why this is important. Like we should do morning and evening puja. The very basic essence to do that is to establish trust in Thakura. Establish Viswas in Thakura. The Thakura is there with us every day. He sits there in our daily household. Because we should consider that this is his house and we are his mere sevakas. So to establish this trust, we need to do that every day. Did you read religious books? Yes, this is related to Sadgrantha Bhatha. So why this is again important? So without reading the Thakura's books, we cannot know what his guidance and principles are. So sometimes what happens, when you experience a terrible emotion or emotional experience, like it could be positive or it could be negative, you might think something as coincidence, correct? But when you read the books, you will relate that this is not a mere coincidence, but this is a spiritual experience in your life. So reading the books help us to guide and take the, and understand what Thakura wants from us. Then the question, did you eat sattvic? Did you eat sattvic or non-veg food? Sattvic ahara is related to Suddha mana. So again, this Suddha ahara is related to Suddha chitta, and this is again related to how you can actually connect the Atma to Paramatma. Then there are other questions like, did you malign or gossip? Or did you hurt anyone? So these are related to Sadachara Palana. So we need to understand that every human, and recently we have been talking with Saurabh Bhai about this particular thing, like every human has guna and dosha, correct? So the idea of us to practice it every day, to understand that every human is not perfect, but as a other human, we need to understand what other person guna is, correct? And ignore the doshas. But also we have to, when somebody do something wrong, we have to tell the person that he has done something wrong, because you have to be on the nyaya path. You cannot bear the anyaya, right? So you have to tell that person, and if that the person does not change, then you have to remain silent. You cannot do much more there. But it's ideal to understand his guna and not criticize, because what would happen if you criticize continuously, then that guna will come, or that dosa of the person will come to you or affect you, not the person to whom you are actually speaking about. So with that, let's establish, just give me a few minutes. Let's establish, this is very important part, the connection between mana, buddhi, chitta and ahankara. So mana is like, it helps us to make, it's actually, sometimes it conflicts with our decisions and choices, correct? And that's why it's called sankalpa and vikalpa. And the moment we decide on something, it becomes like buddhi, and the moment we take an action, it becomes the ahankara. So the buddhi is called jnana, when there is a true knowledge that connects us with atma, with the paramatma, and also it leads to the chitta suddhi. Now the important part, like what affects our mana, like why we get so much, could not decide on something, or why something affects our brain so much that we sometimes choose the negative or bad path. So one of the important aspects of the mana is like, desires, correct? And I think a lot of our bhais told, and desires could be based on your current life, desires could come from your past life, which is called sanskara, correct? So how desires influence your chitta? So what happens is like we have indriya. So indriya actually present the desires to chitta, and then chitta
take the shape accordingly. And so chitta is very dynamic, right? And based on how you see this or how you perceive this desires to your indriya, chitta changes accordingly. So here why I try to connect to Dinalipi is like based on a day-to-day habits, your chitta also gets reflected. So if you practice good habits every day, you achieve the chitta suddhi. Like for example, doing sadhana, doing ahara suddhi, so you achieve a balanced principle in your life where you could connect yourself with Thakura. So with that, I conclude. But one last, my personal experience that I would like to say, and I've told it many times, like Dinalipi has helped me personally, and also help our Gharama as well. Like for example, I love desserts and bakeries. So previously when although I stopped eating non-vegetarian food, I was eating sometimes non-vegetarian food, but when I stopped, I still I cannot let go the desire of eating good bakeries. So when we went to Paris, me and Chinkima, I saw this, very grand, bakery dessert place, and I told Chinkima was not eating at that. I forced her hey, you cannot miss this. This is such a wonderful dessert. You have come to Paris, you cannot miss the dessert. So now Chinkima learned to eat the dessert, and then we came back, and now we started eating the bakeries and nearby all other stuffs every day. And I was thinking, oh, my God, I'm not eating non-vegetarian food, but still I'm doing something wrong here. So what I did is I marked in my Dinalipi, if I eat a bakery which has X, I'll mark this, I'm eating a non-vegetarian as a yes. So when I observed that in the whole month, I actually ate or marked 70% of the time as yes without eating even non-vegetarian food. And I was surprised, and I was totally surprised, what's going on? I should stop it. So this realization actually helped me, the data, the statistics in the day, in Dinalipi chart, helped me to no, we cannot take this anymore. So Chinkiman and we decided we stop eating eggs in our bakery. So this is one of the example, and I think a lot of times we let a lot of difficult paths that we try but we cannot achieve. But we pray to our sincere Thakura, please give us the strength to follow your principles and guideline and to be your Sebaka. Jai Guru. Please forgive me for any mistakes. Jai Guru. Magang. Jai Guru. Tiki moranati sadhana tanati tume nauri amore tiki moranati sadhana tanati tiki moranati sadhana tanati জল রাশি আহা বলি কহি তুমি সাহা হেলাসি দর হসি চাহিল নৌ কাটি বাহিল দর হসি চাহিল নৌ কাটি বাহিল জানি না মুখেতে দূরে জানি না মুখেতে দূরে তুম ঘর গাটি টিকি মোর নাটি সাধনা তনাটি টিকি মোর নাটি সাধনা তনাটি ঝড় বরষা বেଳରେ না যায় ঘরে କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହ ଆଖି ଠାରି ଝଡ଼ ବରଷା ବେଳରେ ନା ଯାଏ ଥରି କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି
टिकी मोर नाटी साधना तनाटी टिकी मोर नाटी साधना तनाटी भोर दरिया तो खाली ढेउ छड़ छड़ आगरे थोड़ जड़ पछरे थोड़ भोर दरिया तो खाली ढेउ छड़ छड़ आगरे थोड़ जड़ पछरे थोड़ कह मोर नाउरी केते बाट आहुरी कह मोर नाउरी केते बाट आहुरी मन हुए तुम प्रेम मन हुए तुम प्रेम गीते नीति गान्ति टिकी मोर नाटी साधना तनाटी टिकी मोर नाटी साधना तनाटी तुमे नाउरिया मोरे तुमे नाउरिया मोरे देखाइल राटी तुमे नाउरिया मोरे तुमे नाउरिया मोरे देखाइल राटी टिकी मोर नाटी साधना तनाटी टिकी मोर नाटी साधना तनाटी टिकी मोर नाटी साधना तुम नाउरिया मोरे तुम नाउरिया मोरे बताइल राटी टिकी मोर नाटी साधना तनाटी टिकी मोर नाटी साधना तनाटी टिकी मोर नाटी साधना तनाटी जय गुरु 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 मध्याह्न अधिवेशन अंतिम पर्यायर आम समस्ते उपनीत ब्रज भाई को अनुरोध करी आगामी कार्य संपर्क सूचना देवे एवं ठाकुर को श्री श्री ठाकुर महाराज को मध्याह्न भोग एवं भक्त मान प्रसाद सेवन पर निमंत्रण जन ब्रज भाई ନାଇଁ ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ବସି ଦେଖୁଛ ନା ସେଇଥିପାଇଁ जय गुरु प्राण ठाकुर डेरी पे क्षमा चाहूँगी 15 मिनट मागिली 25 मिनट होगला अलमोस्ट सॉरी बर्तमान आपण विश्राम गृह विजय करेंगे आपण को मध्याह्न भोग निवेदन करा तापरे आमर आपण विश्राम करेंगे आमर द्वितीय अधिवेशन 3टा बेले आरंभ हम आमर पिला मानक पई यंग एस्पिरेंट सेशन से आपण को निमंत्रण करुच्ची 3टा हो तो भाई माने माँ माने एंड डियर यंग एस्पिरेंट्स ठाकुर मध्याह्न भोग ग्रहण कला परे तांकर दिव्य प्रसाद ग्रहण करने आपको निमंत्रण जनाऊँगी नेक्स्ट अधिवेशन पिलामान अधिवेशन 2:40 प्रतीक्षा सो प्लीज मेक श्योर टू बी हियर अराउंड 2:40 3 o'clock we'll start the session. And one more announcement, just wanted to remind you, those of you who were not here yesterday evening, that Anubhai is available from 12:30 from now on till 1:30. So those of you who want to pay the delegate fee, so he's available. You know who Anubhai is. So please see him, delegate fee pay. And he's available tomorrow. Kali madhya 12:30 1:30 porno madhya 12.
जय गुरु नररूपधर प्रभया हृदि तामस नाश कर